संशोधित कार्यावली के क्रम संख्या 1 के खंड 2 पर अपने नाम के आगे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। श्री पंकज चौधरी। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 5 वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। श्री सोम प्रकाश। Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Srimati Anupriya Singh Patel, I rise to lay on the table of the House paper listed against our name at serial number 6 in the revised list of business for today. डॉक्टर एल मुरुगन। Respected Chairman, sir, with your kind permission, I raise to lay on the table of the House the papers mentioned against the name of my colleague Sri Rajiv Chandrasekhar at serial number 7 of today's revised list of business. सुश्री शोभा कारंद लाजे। Respected sir, I lay the papers shown in serial number 8 of the revised list of business in the Rajya Sabha for today on the table of the House. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश। Respected sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at the serial number 9 of the Ministry of Textiles as the today's revised list of business. श्री सोम प्रकाश। Respected sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 10 in the revised list of business for today. श्री कौशल किशोर। सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के समस्त सूचीबद्ध कागजातों की एक एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। श्री बीएल वर्मा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यवली में क्रम संख्या 12 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। श्री देवू सिंह चौहान। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 13 of today's revised list of business. डॉक्टर एल मुरुगन। Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against the name of my colleague Dr. Bharati Parveen Pawar at serial number 14 of today's revised list of business. श्री कौशल किशोर। सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं अपने सहयोगी श्री विश्वेश्वर टुडू की ओर से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 15 पर उनके नाम के सामने सूचीबद्ध कागजातों की एक एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई। Chairman sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 16 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. डॉक्टर एल मुरुगन। Number 17 of today's revised list. To be laid. See खंड 1 के अधीन निम्नलिखित पद
सभा पटल पर रखे जाने के संबंध में राज्यसभा के पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 171वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करता हूं। Reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare, Shri Bhuvaneshwar Kaita, Shri Sanjeev Arora. Chairman, sir, I rise to present a copy each of the following reports in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare. 156th report on review of National Ayush Mission and 157th report on quality of medical education in India. Thank you. Statements by Ministers, Shri Purushottam Rupala. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to make the statement regarding status of implementation of recommendations contained in the 53rd report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on demands for grant 2023-24 pertaining to the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy. Thank you. Shri Som Prakash. Respected sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Srimati Anupriya Singh Patel, I rise to make a statement regarding status of implementation of recommendation of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce contained in its 177th report on action taken by government on the recommendation observation contained in the 171st report of the committee on issues affecting the Indian tea industry, especially in Darjeeling region. Susri Sobha Karandlaje. Respected sir, I rise to make the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 55th report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on demands for grants pertaining to the Ministry of Food Processing Industries. Honorable members, in the list of notices of matters raised with permission, 0 hour, selected through ballot for today, notices of Shri Naresh Bansal, Shri Vikramjit Singh Sahni are on similar issue of drug addiction. Similarly, the notices of Shri Sant Balbir Singh and Dr. V. Dasan are on the issue of adverse effects of climate change. These notices are similar nature, would be clubbed together, and one member may associate with the other. Shri Saket Gokhale. Thank you so much, sir. Sir, there is a recent event from Meghalaya, which I wish to highlight in this August House. At the start of the current budget session of the Meghalaya Assembly, it was announced that the Honorable Governor would deliver his address to the House in Hindi. This was supported by the BJP in Meghalaya, and the Meghalaya leader of the BJP even incorrectly claimed that Hindi is our national language, so what is the problem? Let me highlight here that Hindi is not our national language. The official language of the state of Meghalaya is English. Meghalaya also has a proud linguistic culture that includes the native languages of Garo and Khasi. Despite repeated demands by the people of Meghalaya, as well as my party, Trinamool Congress, the union government has not yet included Garo and Khasi in the 8th schedule of the Constitution of India. Now, sir, in this context, the Honorable Governor of Meghalaya choosing to address the Assembly in Hindi instead of the state's official language, English, is nothing but a brazen Hindi imposition and an attempt to undermine the linguistic pride of Meghalaya. Sir, we have recently seen the government pass 3 new criminal laws in Parliament after suspending 146 MPs. For some strange reason, these laws have been given very complicated Hindi names, like Bharatiya Nyaya Sanhita or etc. Let me remind the House here
that outside of North India, Hindi is not the native language of crores of Indians. This is precisely why our constitution chose to retain English as an official language along with Hindi. The imposition of Hindi by the union government has even led to an honorable judge of the Madras High Court saying that I don't know how to pronounce the names of these new criminal laws. I'm going to keep calling them IPC and CRPC. Sir, Bangla, which is spoken in my state of West Bengal, is India's second most spoken language after Hindi. Similarly, languages from the south and west like Tamil, Malayalam, Kannada, Marathi, Telugu, and Tulu have their own rich and cultural heritage, and our people take pride in our languages. I said Malayalam. There is a reason that English has been retained as an official language in our constitution along with Hindi. However, the attempts by the current government to forcibly impose Hindi, which is barely spoken by 46% of the population, on the rest of India is a matter of shame. So there is absolutely no respect for local languages. Every new law, every new name that this government gives is given in Hindi for some reason. Are languages of the West, the South, and the East not important in this country? Are regional languages to have no meaning? Sir, I would therefore like to appeal that English as an official language must be used for government business that extends to all of India, including non-Hindi speaking states. When our constitution mandates both Hindi and English as official languages, the imposition of Hindi over English and vernacular languages by the government is an affront to our federal structure and shows shocking disregard for states that do not speak Hindi. Thank you, sir. 1 second. Honorable member, you have taken oath under the Constitution. I strongly suggest you go through the constitutional provisions. 1 second. So go to Article 351. I am reading for the benefit of the House. Directive is a constitutional prescription given by our founding fathers. Directive for development of the Hindi language. It shall be the duty of the Union to promote the spread of Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India, and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style, and expression used in Hindustani and other languages there. You ignored it. Once, please, for a moment. I have not opened it. Can you develop the habit of being slightly decorous? Then sit down. Sit down. No. One sec. And secondly, you see, please, 1 second, one second. Take your seat, Mr. Kiruti Shiva. Ilamaramji, our senior man, please sit down. Honorable members, it has been time and again stated that one second, bear with me, 1 second. Time again stressed, we have a culture of very rich languages. We are proud of our languages. Our languages have even global impact. They have great culture. All I'm saying is we must have a consensual approach. I am merely indicating what the founding fathers of the Constitution have mandated for us since we have taken the oath. We must always be open to make constructive suggestions. If I go to another article, you are fully aware, and that article is all the more significant. It shall be the duty of the Commission, I am on Article 344, to make recommendations to the President as to the progressive use of Hindi language in the official purposes of the Union, restrictions on the use of English language. Sir, Mr. Saket Gokhale, one second. Dr. Keshav, please sit down. Honorable members, please sit down. Sorry. I'm sorry. Please take your seat first. 1 second, sir. Take your seat. Take your seat. Please take your seat.
Why don't you take your seat? What's it? 1 second. Take your seat. Ilamaram Karim, don't force my hands. Please take your seat. You are a senior member. Senior member. Please sit down for a moment. All I am telling you is, 1 second. Has your chairman engaged, 1 second, and hear me carefully. Has your chairman engaged in any transgression except inviting attention to constitutional provisions? Number one, I assert with full sense of responsibility, India is a land where languages make us proud. Our languages, once our languages have depth, our languages have literature, our languages have sweetness. All I'm saying is that the honorable member went on a tangent. These are issues to be in a spirit of cooperation. And every time, Mr. Gokhale, you make a point and you think it is your right to immediately jump on your seat. I will not countenance. Sit down. Have I allowed you? Have I allowed you? No, have I allowed you? No, sorry. I don't appreciate. Honorable members, I don't appreciate it. Nothing will go on record. Nothing will go on record. No, it will not. No. So. 1 second. Will you take your seat? 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 No, Mr. Please sit down. All sections of the house, please take your seat. Mr. Ilamaram Karim, don't. Tiruchi, what will younger members learn from you? Honorable members. 1 second, Mr. Saket Gokhale, I am about to name you. No. You can't lie like this. No. Nothing will go on record. I'm sorry. Tiruchi, I am sorry. Take your seat. No, please take your seat. Take your seat. Dr. John Bittas, take your seat. Please. Honorable members, what are we generating? If I tell a member to maintain decorum, is it wrong? Can I be more patient? I make it a point to make available platform to every member. We will have different point of views. We will deliberate, discuss. We will come. Please. Tiruchi. You know, there is a parliamentary committee. There is a mechanism which I had also. I am fully aware of it. No. Let me make it very clear to the honorable members. I have interacted with the senior members, leader of the parties. They invariably have told me we must have decorum, discipline in the house, and we must demonstrate it. We should not get into a mode where we indicate indecorous behavior. Sir, with folded hands, I plea with you. I take a plea with you. Please. Dr. Kesu, you are very senior, sir. Very serious. So, all right. All right. 1 second. Dr. Keshav. Now, sir. 1 second. Keep on it. Dr. Keshav, have I ever ignored when any member of the house has sought permission by raising of hand? Have I ever declined? My problem, one second. Slight indication also. My problem arises when a member rises and then takes the floor
without permission of the chair. If you all think it is wise, sensible, and decorous that this is the only pattern I should follow, I will follow. Number two, Shri Raiga Krishna. Shri Raiga Krishna. Okay. Please, please. Respected Chairman, sir, the central government has provided reservations to OBC, SC, STs. But OBC students were not given any financial assistance to OBC students, particularly post-matric scholarship, fees reimbursement. It is a part, fees reimbursement and post-matric scholarship. It is a part and parcel of the implementation of reservation. Without financial assistance, how the OBC among the most backward class students, they will study the further studies. And so many students from stone cutter community, dhobi community, hair cutter community, fishermen community students who are comes under OBC category in so many states, but they are not going to study higher education because the government also provided 27% to IIT and IIM. In IIT, IIM, the fee structure is 1,30,000 to 1,08,000. Along this, one more lakhs for maintenance charges. A poor backward class student cannot spend this huge amount, so that they are discontinuing their studies. Some states are providing scholarships and fees within the boundary of their states. Outside, in central institutes, they are not giving sanctioning. At the same time, the government also not helping in financially to school level. Particularly in Andhra Pradesh, the state government is sanctioning first class to 10th class for every boy, OBC boy, 15,000. But the central government is not giving financial assistance to the central government. Every year, they are reducing the budget. Our budget is 47 lakhs crores. But scholarships amount is very less. Post-matric, pre-matric, milke, 2,000 bhi nahi hai. BCs are not the beggars. They are the shareholders of this country. They want, their share should be given. Otherwise, definitely, it is a loss to the country. They are part and parcel of this country. They are the children of this Bharata Mata. So, I request the central government to provide. Shri Prakash Chik Braik. धन्यवाद सभापति महोदय. Subject regarding land deed patta to tea garden worker in West Bengal. पश्चिम बंगाल सरकार ने लंबे समय से चल रही जो डिमांड चाहे मजदूरों के लिए था, वो डिमांड लैंड एक्विजिशन एक्ट पास करके राज्य की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बंदोपाध्याय ने पारित कर दिया कि चाहे मजदूरों को जमीन का पट्टा मिले एवं जमीन का पट्टा दिया जा रहा है. लेकिन कुछ अधिनियम अंडर लेबर टी प्लांटेशन एक्ट 1951 के तहत है, जिसके आधार पे कुछ कंपनी एवं मैनेजमेंट जमीन का पट्टा देने के लिए इनकार कर रहे हैं. जो कंपनी जमीन का पट्टा दिया, उन लोगों को राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय ने केवल जमीन का पट्टा नहीं, जितना जमीन पे हम लोग रहते हैं, जो क्वार्टर है, वो डिमार्केशन करके टोटल एरिया जो बाउंड्री है, टोटल जमीन को श्रमिकों को दिया जा रहा है. साथ ही साथ उन गरीब चाय मजदूरों को जमीन का पट्टा के साथ 1,20,000 रुपया करके बंगला आवास योजना का पैसा दिया जा रहा है. अप्रोक्सीमेटली 22,000 चाय श्रमिकों को यह सुविधा दिया गया है. माननीय मुख्यमंत्री ने जो उद्योग लिया चाय श्रमिकों के लिए, देखिए सर, हम लोग 1951 जो अमेंडमेंट था पीएलए के तहत जो एग्रीमेंट था, दो किस्म का कंपोनेंट हम लोग पाते थे. एक कैश कंपोनेंट जो 250 रुपया है, दूसरा एडिशनल कंपोनेंट जो है
जो एचआरए जो हम लोग अभी नहीं पाते हैं, मेडिकल अलाउंस जो हम लोग नहीं पाते हैं, जो सैनिटेशन का काम जो नहीं पाते हैं, लेकिन राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने प्रत्येक चाय बागान को केंद्रित करके करीबन 44 हॉस्पिटल बनाया, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर की सुविधाएं हैं, बिना पैसा में पेयजल, बिना पैसा में राशन, बिना पैसा में स्वास्थ्य परिसेवा की व्यवस्था चाहे मजदूरों के लिए किया गया। ये श्रेणीय है। हम केंद्र सरकार से दरखास्त करते हैं, जो पीएलए एक्ट 1951 में जो बिल पारित है उसको ठीक करे, एवं जमीन का पट्टा देने के लिए जो मालिक एवं चाय बागान के मैनेजमेंट जो एनओसी देने नहीं चाह रहे, इनको ठीक करें। एवं साथ ही साथ हमारा जो उम्र है रिटायरमेंट का उम्र 58 साल, उसको 60 साल करें, क्योंकि सरकारी नियम के आधार पे 60 साल में ही रिटायरमेंट होती है। हर काम को राज्य सरकार कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार को भी हम गरीब चाय मजदूरों के लिए सोचना पड़ेगा। एवं विभिन्न प्रकार की जो सोर्सेज, विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम है, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने हर प्रॉब्लम को बखूबी देखा है, एवं ये अधिकार जो 200 साल पुराना था, ये अधिकार हम लोगों को मिला। इसलिए हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री को, जो गरीब मजदूरों के लिए काम किया। जय हिंद, जय मामाटी मानुष। श्री सुशील कुमार मोदी। महोदय, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के गठन के संबंध में महोदय, संविधान की धारा 312 के अंतर्गत आईएएस आईपीएस के समान ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के गठन का प्रावधान है। यह प्रावधान डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति से जुड़ा है। अभी ये नियुक्तियां स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हाईकोर्ट की देखरेख में होती है। यूपीएससी जिस प्रकार आईएएस आईपीएस के लिए सेंट्रलाइज्ड परीक्षा लेकर सफल उम्मीदवारों को राज्यों को असाइन करता है, उसी प्रकार एआईजेएस के माध्यम से जुडिशरी के लिए नियुक्ति की जा सकती है। महोदय, फर्स्ट, 8th और 11th लॉ कमीशन ने भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की अनुशंसा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 1991 और 24 अगस्त 1993 को एआईजेएस के पक्ष में निर्णय दिया था। नवंबर 2012 में सेक्रेटरीज की कमिटी, 2013 में चीफ मिनिस्टर्स और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सम्मेलन, 2015 में चीफ जस्टिस के सम्मेलन और 2017 में लॉ मिनिस्टर की अध्यक्षता में विचार हुआ, परंतु कुछ हाईकोर्ट और कुछ राज्य सरकारों की असहमति के कारण मामला रुक गया। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन पर संबोधित करते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा, प्रेसिडेंट कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ AIJS to recruit judges, saying this will help make the judiciary diverse by increasing representation from marginalized social groups. महोदय, कुछ हाईकोर्ट राज्यों के विरोध के आधार पर AIJS को रोका नहीं जाए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रेसिडेंट की अपील के बाद प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में जुडिशियल रिफॉर्म के अंतर्गत AIJS के गठन के काम को पूरा किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सुशील जी। माननीय श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी, डिमांड टू टेक स्टेप्स फॉर द रिवाइवल ऑफ विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। Thank you, sir. Sir, the Cabinet Subcommittee on Economic Affairs on January 27, 2021 gave its in-principle approval 100% disinvestment of government stake in RINL, also called Visakhapatnam Steel Plant or Vizag Steel, along with RINL stake in its subsidiaries, joint ventures through strategic disinvestment by way of privatization. Subsequent to the decision of the government, there is much discontent among the crores and crores of people of the state of Andhra Pradesh. The employees and the union of the Vizag Steel Plant are continuously staging, demonstrating, agitating against the government's decision. The request to reconsider the government decision has been made in various fora by the people's representatives. The Visakhapatnam Steel Plant is currently operating at 68% of 6.3 MTPA capacity up to February 2023. Though the blast furnace and steel melt shop are modernized and enhanced to 7.3 MTPA, the downstream integrated steel plant producing capacity has not been expanded to 7.3 MTPA capacity. Sir, certain constraints are there which hinders the operation of the full capacity of the plant.
Obviating those constraints will certainly make running the steel plant in profitable manner. RINL does not own captive iron ore mines. It has been depending on supplies from Baldia on mines and being run by the National Mineral Development Corporation and importing coking coal from Austria. RINL incurring additional burden around 15,000 to 2,000 crores per annum compared with the other steel plants. Parliamentary Standing Committee also 2015 recommended to government to allot separate WACs. Various steps are being taken. RINL have its own captive mines. One such is request made by the Visakhapatnam Steel Plant to the state government of Andhra Pradesh for reservation of iron ore deposit under Section 17A 2A of Mines and Minerals Development Regulation Act 2015. The Ministry of Mines had informed to one of my parliamentary questions that it had not been received any such recommendation from the state government of Andhra Pradesh. It is quite unfortunate. The state government of Andhra Pradesh, though people are agitating for years together, they did not consider. Under these hostile circumstances, it is very unfortunate to take the decision of disinvestment of RINL. It will put to mark on the livelihood of many workers and employees working in the plant. So in view of the above, I request the central government to reconsider their proposal, irrespective of the negligent attitude of the government of Andhra Pradesh. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय कनक मेदला रविंद्र कुमार जी। माननीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा डिमांड टू रिलीज फंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्स इन रेवाड़ी। धन्यवाद। मैं इस मौजूदा बजट में जो हरियाणा की एम्स परियोजनाएं हैं उनके लिए अपर्याप्त बजट आवंटन की मांग उठाना चाहता हूं, की बात सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहाँ रेवाड़ी में, मनेठी में एम्स, जो आज 22 नए एम्स परियोजनाओं के लिए सरकार ने 6,000 करोड़ का बजट रखा है, उसमें उनका नाम शामिल किया गया, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिस तरह से बजट आवंटन हुआ उसमें 250 से 300 करोड़ एक नए एम्स के बाटे आएगा, जो अपर्याप्त है, क्योंकि सीएजी की जो रिपोर्ट आई 2020-21 में, उसके अनुसार एम्स की, किसी भी एम्स की परिसर को तैयार करने, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग 3,000 करोड़ के आसपास सीएजी ने दिखाई गई है। इस रफ्तार से इस एम्स को पूरा होने में लगभग 12 वर्ष लग जाएंगे अगर इसी रफ्तार से बजट आवंटन हुआ, जो कि काफी लंबा अंतराल है। मैं जानकारी में लाना चाहता हूं कि ये इस एम्स की घोषणा 2015 में हुई थी और 9 साल के बाद ये कागजों से निकलकर अब इसका चुनावी वर्ष के अंदर बजट आवंटन हुआ है 250-300 करोड़ का, लेकिन ये अपर्याप्त साबित होगा अगर और 12 साल इसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इंतजार करना पड़े। साथ जो एम्स बाड़सा परिसर में, जो हमारे वहां पर बाड़सा परिसर एम्स 2 में नेशनल सेंटर फॉर चाइल्ड हेल्थ 500 बेड का, नेशनल कार्डियोलॉजिकल सेंटर 600 बेड का ये सैंक्शन है। 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसका फाउंडेशन रखा था। वहां नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट तो बन गया, लेकिन बाकी ये 10 इस तरह के राष्ट्रीय संस्थान जो 15,000 करोड़ की लागत से बनने थे, उनके लिए कोई बजट का आवंटन नहीं किया गया है। मैं मांग करना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं के लिए भी बजट का आवंटन किया जाए। 10 वर्ष में इन परियोजनाओं का कोई 1 रुपया भी बजट का आवंटन उसी रूप से नहीं किया गया जैसे हमारे यहाँ मेट्रो का विस्तार हमारे क्षेत्र में होना था। रोहतक, रेवाड़ी, गुड़गांव, रोहतक, रेवाड़ी, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, इन दिशाओं में मेट्रो का विस्तार होना था, लेकिन 10 वर्ष तक सरकार ने मेट्रो के विस्तार के एक खंबे का भी बजट नहीं दिया। या फिर इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो गुड़गांव के अंदर, उसकी फाउंडेशन स्टोन तो रखा गया, लेकिन 4 दीवारी ही हुई 10 साल में, आगे काम ना हुआ। तो मैं आग्रह करूंगा सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि आज ऐसा ना हो कि इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाए लेकिन आगे काम उस गति से ना हो जितना लोगों को आशाएं हैं, चाहे वो एम्स रेवाड़ी की बात हो और चाहे बाड़सा एम्स परिसर के अंदर जो बाकी जहां आपने बजट नहीं रखा गया है वहां भी आप बजट बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद दीपेंद्र जी। माननीय श्री सुजीत कुमार जी डिमांड टू एस्टेब्लिश ए नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च सेंटर इन ओडिशा। Thank you, sir. Sir, I rise to request and urge Government of India to establish in Odisha a satellite center of National Center for Coastal Research, NCCR in short. Sir, NCCR is under the Ministry of Earth Science and it is in Chennai. And its mandate is to promote research in the areas of coastline erosion,
coastal natural disasters, coastal vulnerability, and to build India's capabilities and capacities in the maritime domain. Sir, we have a 7,500-kilometer long coastline, and we have a vast exclusive economic zone of 2.37 thousand square kilometer, 2.37 million square kilometer, I'm sorry. But despite this, sir, we have only one center of coastal research, that's in Chennai. Sir, sir, it's a well-known fact that India is one of the most vulnerable countries that will face the adverse impact and effect of climate change. Sir, it is estimated that by 2050, around 1,500 square kilometers of land in India would be submerged due to the rising sea level, and about 37 million people will be displaced because of coastal flood and inundation. Sir, in my state of Odisha alone, sir, about 153 kilometers of land has already been submerged, which is almost 28% of our coastline, that is 485 kilometers. 16 villages have already been displaced. And close to, sir, 5,000 families have been displaced. Sir, uh, sir, Odisha is known globally as a pioneer and as a model of disaster management. Sir, Honorable Chief Minister Naveen Patnaik has often articulated his goal of zero casualty in case of any natural disasters. Sir, we have seen that in the super cyclone of Phylline in 2013. And again, sir, Odisha's preparedness and model of disaster management was on display during the super cyclone of Fani in 2019. Sir, many UN agencies, many international bodies such as the UN and World Bank have commended Odisha for this. Sir, we have about 800 disaster resilient multi-purpose cyclone shelters dotting the landscape of coastal Odisha. We are the first state in the country, sir, to have a early warning system, which is technology driven. We are again the first state in the country, sir, to have settlement policy for displaced villages. Sir, we are allocating a huge budget for disaster management and preparedness. In BE of 23-24, sir, 3,700 crore was allocated for disaster management, which is much higher than the national allocation as well. So, sir, the reason I say all this is to bring to your notice, sir, that, sir, Odisha's capabilities may be deployed, may be utilized by having a satellite center of coastal research. And not only Odisha, sir. Sir, I would also urge the government to have one center in west coast of India also. Sir, this will be the true tribute to this. Thank you, Mani Sujit ji. Mani Honorable Sri P. Wilson, concern over sudden withdrawal of operation of international flights from Chennai Airport. Thank you, Deputy Chairman, sir. Chennai is one of the largest metropolitan economies in India and is known as India's health capital. However, the airport in Chennai is in a very poor condition. Chennai International Airport is among the top 50 airports in Asia and accommodates over 18 million passengers annually. It is strategically important port city in India and is therefore the foremost commercial and industrial hub in South India. Due to its commercial nature and interest from international investors, Chennai is also a popular destination for international passengers. However, there has been a drastic increase in the withdrawal of operations of international flight by the international operators. This is due to shortage of aero bridges for international flights, with only 4 available. As a result, many flights are handled at remote parking bays away from the terminal, which has significantly increased the time to board and allied passengers load and unload baggages. Furthermore, Chennai Airport is not currently equipped to handle large planes with a capacity of 400 passengers and double-decker planes because it does not have suitable aero bridges or parking bays. Also, there are no aero bridges that can be used to dock large planes. Previously, British Airways operated a massive freighter to Chennai, requiring authorities to temporarily close a taxiway near the runway until the aircraft reached its designed parking bay. The aircraft broad wingspan led to the tips encroaching onto the parallel taxiway, necessitating restrictions on the other plane accessing the taxiway while the freighter was on the runway. This resulted in significant inconvenience to the other operators and to the public. This situation has forced international operators seeking to expand their flight operations in Chennai to opt for alternative airports such as Bangalore and Hyderabad over Chennai. As a consequence, flight frequencies to European destinations have decreased despite the increasing demand from the public. To make matter worse, the Director General of Civil Aviation
has replaced Chennai airports with Hyderabad and Bangalore airports as point of collateral for several countries. This makes it unlikely that Chennai will get flights to such countries in near future. Therefore, the current situation in Chennai International Airport needs immediate attention. This has often raised questions about the strategic importance of Chennai International Airport. I therefore request the Honorable Civil Aviation Minister to address this matter with utmost importance, call for a report on this issue, and arrange for a feasibility study to add more air bridges and restore point of collateral for various international destinations to Chennai International Airport. Thank you very much, Thank you, Deputy Mani Chairman. P. Wilson ji. Mani Shri Naresh Bansal ji, concern over rising cases of drug addiction in Uttarakhand. धन्यवाद उपसभापति जी। मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान ऐसी समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिससे आज की हमारी युवा पीढ़ी जूझ रही है। देवभूमि उत्तराखंड विशेष रूप से इससे ग्रसित है। वहां पर बड़े नामी गिरामी स्कूल हैं, एजुकेशन हब है, जिनके हॉस्टल में पूरे देश भर के बच्चे पढ़ते हैं और वो हॉस्टल, वो स्कूल, कॉलेजेस आज नशे की गिरफ्त में हैं। ड्रग्स के जो स्मगलर हैं, तस्कर हैं, उनके लिए वो एक बहुत ही इजी पॉइंट है। स्कूलों की छुट्टी के समय, इंटरवल के समय वहाँ पर इनकी गतिविधियाँ चलती हैं और आज का युवा, विशेष रूप से किशोर किशोरियाँ उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। अनेक प्रकार के हथकंडे उनको उसकी लत लगाने के किए जाते हैं और ऐसा लगता है कि उनके मन में इस प्रकार की भावना भरी जाती है कि अगर इसका आनंद नहीं लिया तो शायद वो पिछड़े रह जाएंगे। एक आधुनिकता का सिंबल बनाया जा रहा है और आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल जिला विशेष रूप से ग्रसित है और जब इसकी लत लग जाती है और पैसे नहीं होते जेब में तो अनेक प्रकार की चोरी, अनेक प्रकार के, पुलिस ने भी ऐसे गिरोहों का भंडाफोड़ किया है जो नशे के कारण से, नशे की लत के कारण से चोरी करते हैं, मकानों में चोरी करते हैं, व्हीकल्स चुराते हैं और फिर वो उनका जीवन बर्बाद होता है। इस प्रकार के बहुत आसान इनके लिए है। जब पैसे नहीं रहते तो यही उनके शिकार होते हैं, उनके कैरियर बन जाते हैं। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूं आपको कि अभी देवभूमि में पुलिस ने एक रुड़की के अंदर भंडाफोड़ किया है, जिसमें एक बालक ने जो नशे का शिकार हो गया और कर्ज में हो गया, पैसे नहीं थे, पेट्रोल पंप का मालिक उसके पिताजी थे, उसने अपने पिताजी का मर्डर करा दिया इसलिए कि उसको पैसे चाहिए, संपत्ति चाहिए। ऐसी घटनाएं हो रही। भाड़े पर मर्डर को ला करके अपने पिताजी का मर्डर करा दिया जिससे उसको पैसा मिले, वो नशे का काम कर सके। इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। हालांकि सरकार भी उस पर ध्यान दे रही है, उत्तराखंड की पुलिस भी अवेयरनेस कैंप चलाती है स्कूलों में, लेकिन उससे केवल काम नहीं चल रहा है, क्योंकि अन्य राज्यों से जो आपूर्ति होती है, विशेष रूप से बरेली, रामपुर, बेहड़ी, इसे तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इसकी जो आपूर्ति। थैंक यू माननीय नरेश बंसल जी। माननीय श्री विक्रमजीत सिंह साहनी, कंसर्न ओवर प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन इन इंडिया। सुहानी एक कहानी खा गया, पंच दरिया की रवानी खा गया, एक ऐसा दानव आया मेरे गांव जो मेरे सूबे की जवानी खा गया। Chairman sir, I stand in this august house to raise an issue which is very close to my heart, the drugs menace eating our motherland Punjab and other parts of India like a termite. मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि कुछ समय पहले NIA ने 3000 kg के ड्रग्स 21,000 करोड़ रुपए के मुंद्रा पोर्ट में पकड़े। ये मैं नेक्सस बता रहा हूं। अभी BSF have written to Narcotics Control Bureau about a recent drug bust at India-Pakistan border और उनका लिंकेज some prisoners in अमृतसर and तिहाड़ जेल। अब BSF ने 1 फरवरी रात को 4 लोगों को पकड़ा तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में, जो पाकिस्तान से ड्रोन
के माध्यम से ड्रग्स पंजाब में आ रहे थे, हेरोइन अफगानिस्तान से आ रही थी। उनको पता लगा कि ये पाकिस्तान के ड्रग सप्लायर्स ने तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में यूथ को वो रिक्रूट करते हैं और उनका नेक्सस फिर जेलों में चलता है। पहले तो आपने भी बड़ी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि हमारे जो जेल हैं, सुधारघर हैं नाम के, वहां जितना भी माफिया, उनके पास सैटेलाइट फोन भी हैं, दूसरे फोन भी हैं। तो ये जेलें हैं कि बनाना रिपब्लिक है। इस पे मैं गृह मंत्री जी को कहूंगा कि सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि रोज ही ये खबर आती है और मेरे को जरूरत नहीं कितने गैंग ये जेलों से ऑपरेट कर रहे हैं। और इसके ड्रोन्स के लिए I demand that to stop such drones entering the Indian airspace, government should immediately work on anti-drone technology alongside Indo-Pak border so that our youth can be saved. अभी मेरे कुलीग बता रहे थे उत्तराखंड से कि ये ऐसा नहीं है कि हमने भी डी एडिक्शन रिहैब सेंटर हम 5 चलाते हैं पंजाब में। ऐसा नहीं है कि ये उससे नौकरी से है कि गरीब हैं, नौकरी नहीं है, वो तो है। अमीर भी ले रहे हैं, स्कूलों के बच्चे भी ले रहे हैं, नाइट क्लब्स में भी साहब ड्रग्स चल रहे हैं। मैं आदरणीय होम मिनिस्टर जी को जहां बधाई देता हूं, अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसकी करी है, लेकिन ये जेलों में शिकंजा कसना होगा। और ये जो ड्रग की सप्लाई, ऐसे ही पंजाब गवर्नमेंट ने भी पंजाब स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल भी बनाया है ड्रग्स की प्रॉब्लम को। इसलिए हमें सब तरफ से मिलजुल के हमारी जवान पीढ़ी को बचाने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, सप्लायर पे शिकंजा, क्रैकडाउन, अवेलेबिलिटी और ड्रग रिहैब सेंटर, और ये जो शहरों में, स्कूलों में, नाइट क्लब्स में ये जो नेक्सस ड्रग्स का चल रहा है, ये बहुत चिंता की बात है। मैं आपसे आग्रह करूंगा अगले सेशन में इस पे पूरा शॉर्ट डिस्कशन इस सदन में होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री विक्रमजीत सिंह जी। माननीय श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि, डिमांड टू बिल्ड रेलवे ओवरब्रिज इन जबलपुर। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आपने मुझे अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, मेरा मुद्दा संस्कारधानी जबलपुर जिले के 2 हिस्से को रेलवे ब्रिज से जोड़ने को लेकर है। महोदय, जबलपुर मध्य क्षेत्र विजयनगर के अंतर्गत जबलपुर विकास प्राधिकरण की स्कीम 41 जबलपुर के ही पश्चिम हिस्से संजीवनी नगर यूं तो मात्र कुछ मीटर पर है, लेकिन रेल पटरी होने के कारण यह 7 किलोमीटर का लंबा रास्ता हो जाता है। महोदय, दोनों हिस्से रिहायशी एवं व्यावसायिक हैं। इस दृष्टि से जबलपुर अति महत्वपूर्ण है एवं शहर की लगभग आबादी ज्यादा हिस्से में इस तरफ रहती है। महोदय, रोज लाखों जबलपुर वासी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में चक्कर लगाते हैं, जिससे समय, संसाधन और पर्यावरण का नुकसान भी होता है। महोदय, जहां एक तरफ पश्चिमी हिस्से में सुप्रसिद्ध हमारा मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय राजमार्ग, नर्मदा का पावन तट, विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट आदि हैं, वहीं मध्य में बहुत बड़ी अनाज की मंडी एवं सब्जी की मंडी है। महत्वपूर्ण स्कूल और कॉलेज, मार्केट इत्यादि हैं। इन दोनों हिस्सों को रेलवे ओवरब्रिज के माध्यम से जोड़ा जाए तो 7 किलोमीटर का जो रास्ता है वो 700 मीटर में आ जाएगा। इससे आवागमन में बहुत सुविधा होगी, साथ ही व्यवसायिक विकास को गति मिलेगी एवं सामाजिक जन सुविधाओं को सुलभता से लगभग 10 लाख की आबादी को प्राप्त होगा। माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया इस विषय पर संज्ञान में लेते हुए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण के बारे में विचार करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सुमित्रा जी। माननीय श्रीमती कांता करदम जी, नीड टू क्रिएट एक्स्ट्रा स्टॉपेज ऑफ वंदे भारत एट गाजियाबाद। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से आती हूँ। मेरा पड़ोस का जनपद गाजियाबाद, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र में से एक है। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से तीर्थ क्षेत्र श्री अयोध्या धाम के
20 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22,426, 22,425 चलती है। आनंद विहार स्टेशन के इसके बाद अलग स्टॉपेज लगभग 428 किलोमीटर की दूरी पर कानपुर सेंट्रल पर है। हालांकि यह ट्रेन गाजियाबाद होकर जाती है, परंतु वहां पर इसका स्टॉपेज नहीं है, जिससे कि आसपास के जनपद जैसे कि हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर के यात्रियों को असुविधा होती है और उन्हें इस ट्रेन को पकड़ने के लिए यहाँ से दिल्ली आना पड़ता है। यह फिर अन्य ट्रेनों या साधनों से अयोध्या या लखनऊ जाना पड़ता है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों की ही हानि होती है। उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री से यह अनुरोध करती हूं कि दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से तीर्थ क्षेत्र से अयोध्या धाम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22,426, 22,425 का स्टॉपेज गाजियाबाद में भी किया जाए, ताकि गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर इत्यादि आसपास के क्षेत्रों के हजारों यात्रियों को इसका लाभ मिल सके और इस क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रामलला के दर्शन करने का और अन्य कार्यों के लिए अयोध्या जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद कांता जी। Honorable Sri Maharaja Sanja Oba Leshamba demand to check population growth rate in Manipur. Thank you, sir. Population growth rate in some hill districts of Manipur is abnormally high as compared with that of India. This is highly needed to check for socio-economic planning and the demographic balance of the state. It also affects population growth rates of Valley district due to huge migration from the hill district. Some main factors for this abnormal growth rates are: number one, porous border fencing; number two, access to free movement regime; number three, negligence of security forces to guard the border; number four, uncertainty and turmoil in neighboring country; number five, manipulation of census figure to get political advantage; and number six, immigration from neighboring countries for various reasons, etc. Sir, there were many ethnic classes in different parts of northeastern regions due to the above cited factors, and the same has been witnessing in Manipur for the last 9 years. Taking the issue seriously, the union government has taken up series of measures to curb the situation. For example, scrapping of free movement regime, impenetrable border fencing of 1,643 kilometers are to be constructed soon. Setting up of population commission and the biometric test has already undergone to eliminate the foreigners, etc. So, to check the unnatural or abnormal growth rates in the state, I urge the union government to implement a full-fledged NRC in Manipur with base year either 1951 or 1961 at the earliest for safeguarding the national security of our country. Thank you, sir. Thank you, Maharaja Sanja Oba ji. Mani Sri Trichu Sivaji, cyber crime against women. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, according to the report of the National Crimes Records Bureau, crimes against women has risen by 4% in 2022 when compared to 2021. Over 4.45 lakh cases of crimes against women were registered in 2022. This equates to about 51 FIRs filed every hour. This shows that the high crime rate is evident that women and girls remain unsafe and unequal in India. While grievance redressal remains snail-paced, the proportion of women officers in the force is dismal and the recruitment rate is very, very low. So much worrisome is that an alarming number of 65,893 cases were registered under cyber crimes, showing an increase of 24.4%. Of these, 5.2%, that is 3,434, are of sexual exploitation. The surge in sexual harassment on social media and the proliferation of deep fakes has reshaped the contours of crime and women's safety by accentuating gendered power abuse. Deep fakes can imitate the face, body, sound, speech, environment, or any personal information to create an impersonation.
This piece of technology is ridden with issues and can threaten the social fabric of India. It not only violates a woman's privacy, but also increases the potential for the creation of non-consensual explicit content, exposing them to social stigma. Where women have historically been a victim of cruelty, abduction, dowry deaths, and assault under patriarchy, deep fake technology poses an additional layer of complexity. I urge the Union government, sir, to take necessary and immediate steps to tackle these rising challenges to women's protection and security and empowerment posed by the explosion of cyber crimes and deep fakes in this country. Thank you, Trichu ji. Manya Shri Sant Balbir Singh ji, concern over climate change and its adverse effects on agriculture. बहुत बहुत जी बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਮ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 310 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਵਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ml ਜਿਹੜੀ ਵਰਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 550 ml ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ml ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ क्वेश्चन और प्रभाव धन्यवाद संत बलबीर सिंह जी। क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 76 माननीय श्री विजयपाल सिंह तोमर जी। माननीय मंत्री जी फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय विजयपाल सिंह तोमर जी। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि गायों में और विशेष रूप से जर्सी गायों में टीबी की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। जब टीबी की बीमारी होती है तो उनके दूध में भी जाती है और बच्चों में मानव शरीर में भी जाती है, जिससे वो मानव में फैलती है। उस टीबी की बीमारी को रोकने के लिए कोई वैक्सीन या क्या उपाय किए गए? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय तोमर जी ने जो बीमारी के बारे में खास करके टीबी की बीमारी जो जर्सी गायों में हो रही है उसके बारे में चिंता जताई है। ये बात सच है कि इनसे पशुपालक को भी नुकसान होता है, उसके हेल्थ को भी नुकसान हो रहा है, मगर अभी तक इस टीबी के बीमारी की ऐसी कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। और हेल्थ के लिए सर मुझे आज इस ऑगस्ट हाउस को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर पूरे देश के पशुधन को वैक्सीनेटेड करने के लिए भारत सरकार की ओर से 100% खर्चे से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। 13,000 करोड़ रुपए की राशि अपने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए आवंटित की गई है और राज्य सरकारों के साथ मिलकर ये कार्यक्रम को हम आगे चला रहे हैं। और इसी के चलते पशुधन का भी हेल्थ के लिए नेशनल कॉन्सेस भी बना है, पशुपालकों में भी अवेयरनेस आ रहा है और हमारे पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है। धन्यवाद। माननीय विजयपाल सिंह तोमर जी, दूसरा सप्लीमेंट्री। महोदय, हालांकि आईसीआर के अधीन 19 पशु चिकित्सा संस्थान स्थापित हैं, लेकिन मान्यवर ऐसी
AR के संस्थानों में से एक भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI चिकित्सा के मुक्त अनुसंधान सुविधाओं वाला प्रमुख संस्थान है, जो पशु चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या कोई दूसरा संस्थान भी ऐसा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की कोई योजना है? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो संस्थान IVR का उल्लेख माननीय सदस्य ने बताया है, ये बहुत ही हमारे देश का प्रतिष्ठित पशु चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च करने का अच्छा संस्थान है। विश्व की दृष्टि से उनकी मान्यता है। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये सेंट्रल डिसीज डायग्नोस्टिक सेंटर अपना बरेली में IVR है, ऐसे 5 क्षेत्रीय रीजनल डिसीज डायग्नोस्टिक सेंटर भी है। वेस्टर्न रीजनल के लिए पुणे में है, ईस्टर्न रीजन के लिए कोलकाता में है, साउथ रीजन के लिए बेंगलुरु में है, नॉर्थ रीजन के लिए जालंधर में है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर गुवाहाटी में। धन्यवाद। माननीय सुलता देव जी, सप्लीमेंट्री। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर फॉर गिविंग मी द परमिशन। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि पूरे भारत वर्ष में 15 वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ है, डिफरेंट स्टेट में, 15 स्टेट में। उड़ीसा में वेटनरी यूनिवर्सिटी करने का क्या प्रस्ताव है? क्योंकि 2021 में उड़ीसा में वेटनरी यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट किया गया था, उसके लिए 20 करोड़ का बजट भी एलोकेशन हुआ था, मगर वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोर को चला गया है। आज भी हमारे वहाँ पर वेटनरी डॉक्टर स्ट्राइक पे बैठे हैं, 15 दिन हो गया, और हंगर स्ट्राइक पे 3 दिन हो गया बैठे हैं। मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहती हूँ कि झारखंड में भी है, हमारे पास के स्टेट वेस्ट बंगाल में भी है, मगर हमारे उड़ीसा में जो प्रोजेक्ट दिया गया था वो क्यों कोल्ड स्टोर को चला गया? कब उसका रिवाइवल होगा? थैंक यू सो मच सर। श्री साकेत गोखले, सर नॉट प्रेजेंट। Yes, Honorable Minister. Sorry, Honorable Minister. No, sir. There was some mishap. बदलाव संध्या काल में ऐसा होता है। ये संध्या काल है। Grateful for appreciating it. ये माननीय सदस्य ने जो उड़ीसा की वेटरनरी यूनिवर्सिटी के बारे में प्रश्न उपस्थित किया है, मैं उनके संज्ञान में बताना चाहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी बनाने का वो राज्य सरकार का दायित्व होता है। राज्य सरकार इसमें आगे बढ़े तो भारत सरकार इसमें इनका सहयोग करने का जो भी हमारे पास प्रस्ताव आएगा तो हम जरूर देखेंगे। वो जो स्ट्राइक का उल्लेख कर रहे हैं उसका भी कोई कॉग्निजेंस भारत सरकार को अभी तक मिला भी नहीं है, हमारे संज्ञान में भी नहीं है। आपके माध्यम से अगर इसी में भारत सरकार का कोई इंटरवेंशन आप चाहते हैं तो हमारे संज्ञान में डालिए, तो हम इस पर विचार करेंगे। श्री साकेत गोखले, नॉट प्रेजेंट। श्री हरनाथ सिंह यादव। माननीय सभापति जी, गाय विश्व का एकमात्र प्राणी है जिसका दूध, घी, छाछ और मलमूत्र वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी और पवित्र माना जाता है, जिसके कारण से समस्त हिंदू समाज गाय को सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और चिकित्सकीय दृष्टि से अति श्रद्धा के साथ गौमाता के रूप में पूजा करता है। परंतु सरकारी अभिलेखों में गौमाता को गौ पशु के रूप में उल्लेख होता है, जो करोड़ों लोगों की भावना को आहत करता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या सरकार गौमाता को गौ पशु संवर्ग से हटाकर अलग से गौमाता संवर्ग बनाने पर विचार करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, हरनाथ सिंह जी का ये बहुत ही भावना सभर अच्छा सुझाव है, उस पर सरकार अवश्य विचार करेगी। मैं इस सदन के माध्यम से एक बात भारत के पशुपालन मंत्री के नाते
बताना चाहता हूं सर कि जैसे मल और मूत्र वो शब्द ही अपवित्रता के द्योतक है, उसको कहने से फिर उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं होती है और वो किसी का पवित्र नहीं होता। पूरी दुनिया की पूरी सृष्टि में जल थल नभ में एक हमारी देशी गौमाता ऐसी है जिसका मल और मूत्र पवित्र है। सो ये कुछ कुदरत ने ही ऐसा सर्जन किया है, इसका सम्मान हम तो कर ही रहे हैं, मगर अब विश्व भी कर रहा है और दुनिया में हमारी इंडिजिनस गाय का बहुत ही बड़ा मार्केट खड़ा हो रहा है, दुनिया में उसका डिमांड बढ़ रहा है। Honorable members, His Excellency Dr. Hassan Mahmood, Honorable Foreign Minister of Bangladesh, an honored guest, is seated in the special box to view our proceedings of the House. On my own behalf and on behalf of the honorable members of the House, I have great pleasure in welcoming His Excellency Dr. Hassan Mahmood, Honorable Foreign Minister of Bangladesh. Through him, we convey our greetings and best wishes to the members of Parliament, the government of Bangladesh, and the friendly people of Bangladesh. Our greetings and best wishes. Question number 77, Sri Kanak Medla Ravindra Kumar. Sir, question number 77. Honorable Minister. Laid on the table of the House. First supplementary, Sri Kanak Medla Ravindra Kumar. Sir, I had gone through the answer given by the Honorable Minister. Out of 477.39 crores, the state government has deposited 52.69 crores. Likewise, out of 421.35 hectares, 162.52 hectares has already handed over with regard to the project. Similarly, Nadikudi Srikalahasti new lane, Bhadrachalam Kovur new lane, Vijayawada, Gudivada, Bemaram, Narsapuram, Gudivada, Machilipatnam, Bemaram lane, Kadapa, Bengaluru new line, Tumkuru, Rayadurgam new line, Visakhapatnam metro line. Already the projects are there pending for the last several years. All these projects are non-startup, despite of the small contribution by the government. And the state government, according to the answer, the state government did not allocate the sufficient land and funds. In view of this non-startup projects for the last 21 years, last few years, whether there is any proposal to central government on its own to take up the railway projects due to the financial doldrums of the state of Andhra Pradesh in view of the present system. Honorable Minister. The Chairman, sir, Honorable Member has raised a very valid point. When there was a very clear agreement between a state government and the central government for a particular project, then that agreement should be honored. Wherever the central government has taken up the projects on their own, and of course all those decisions are taken in consultation with the state governments, projects have been fully funded by the central government. But in the cases that Honorable Member has mentioned, the state government had promised to contribute because those projects had some financial viability issues. So the state government must honor their commitments. Second supplementary, Sri Kanak Medala Ravindra Kumar. Sir, with regard to the, in view of the, as per the provisions of the AP Reorganization Act, South Central Railway Zone has to be established in the state of Andhra Pradesh, Visakhapatnam, origin. Despite of the proposal made by the central government, and according to the central government, the state government did not allocate the sufficient land at the answer given by the earlier by the Honorable Railway Minister.
But the state government is expressing their opinion. We have already addressed the letters to the central government. Despite of the central government, state government willingness, the railway department did not come forward to establish the railway zone. Your supplementary. What is the impediment to proceed further in respect of the railway zone? Honorable Minister. The land which has been identified so far, it's a 52-acre plot. That is the backwater of a lake, sir. This is highly waterlogged land, which is not suitable for constructing a south coast zone building. So that's why we have requested that a suitable land may be identified by the state government. That process is on. In the meanwhile, sir, I would also like to point out that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has allocated record amount of funds for development of railways in Andhra Pradesh. During the period 2009 to 2014, the average allocation for Andhra and Telangana, the undivided state, used to be only 886 crore. In the current budget, Honorable Prime Minister has allocated 9,138 crore rupees. Sir, Prime Minister has always said, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas or Sabka Prayas. That fourth element is very important, Sabka Prayas. Sabka Prayas will mean that the state government also must come with rapid land acquisition, with support in the land, in law and order, sir. Out of the 4,373 hectare land required for development of railway projects in Andhra, only 2,023 has been acquired so far. So I'll request through the honorable member to kindly request the state government to, as far as possible, support the development of railways. Third supplementary, Shri Saket Gokhale. Thank you so much, sir. Sir, I would, through you, like to ask the Honorable Minister, so there are constant reports and complaints on social media from passengers regarding overcrowding in general compartments of trains, and that unreserved passengers have now begun traveling in sleeper and three-tier AC coaches. So I just want to ask the Honorable Minister, what steps are the railways taking to reduce overcrowding in trains, and how does the railways plan to increase the passenger capacity, since it is clear today that the number of passengers far exceeds the available capacity? I'll request your kind self to have an orientation course for the honorable minister of the honorable member, because when a supplementary question has to be asked, that has to be related to the questions. It is not.